गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज 3 अप्रैल 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर को हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रिपरेशन को आपको हेल्पफुल बनाने के लिए हम लोगों ने इस लेक्चर को रेडी किया है। इस पूरे लेक्चर को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला सेक्शन है वो हमारा हिंदी ट्यूटोरियल के वोकैब सेक्शन। हिंदी ट्यूटोरियल के एक वोकैब को एक एडिटोरियल को हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं और उसके वोकैब्स को हम लोग जो है इसमें सेलेक्ट करते हैं। सेकंड वन इज इंग्लिश कंप्रीहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जो कि हिंदी ट्यूटोरियल से प्रिपेयर किए जाते हैं। 5 idioms and phrases, and the last one is writing section, where we'll give you the writing topics. And the today's first section is our editorial vocab, and the first word that we have today is verdict, means निर्णय। ये एक noun है, and the meaning is the finding of a jury and issues of fact submitted to it for decision, and the synonyms are judgment, adjudication, adjustment, and the antonyms are acceptance, patronage, and admiration, and the example is the verdict cannot be termed as a judicial verdict after hearing both the parties. Second one is परप्लेक्सिंग, मीन्स पेचीदा। आप देखेंगे किसी चीज़ को आप सॉल्व करने में, अगर पजलिंग है, सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसे हम लोग जो है वो पेचीदा बोलते हैं, परप्लेक्सिंग। ये एक एडजेक्टिव है, एंड द मीनिंग इज लैकिंग क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, एंड द सिनोम्स आर अनक्लियर, पजलिंग, कंफ्यूजिंग, एंड द एंटोनिम्स आर क्लियर, प्लूसिड, clarity, and the example is perplexing. It may be, but none of these etymology is going to waste. थर्ड वन इज डाइवर्जेंस, मीन्स असहमति। किसी चीज़ के लिए अगर हम एक मत ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं असहमति, डाइवर्जेंस। ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज द एक्ट ऑफ मूविंग अवे इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एंड द सिनोम्स आर डाइवर्जेंसी, separation, and the antonyms are union and integration, and the example is the divergence, though unfortunate in itself, is really a sign of healthy growth. And the fourth one is invisence, means सामना करना, and the face करना, and the verb, and the meaning is from a mental image of something that is not present or that is not the case, and the synonyms are foresee, envision, prefigure, and the antonyms are refrain, plain, unadorned, and the example is how do you envisage a future in which the changes you're advocating for have happened. फिफ्थ वन इज एपेक्स, मीन्स शिखर। ये एक नाउन है, आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पिक पॉइंट, एंड द मीनिंग इज the highest point of something, and the synonyms are acme, crown, vertex, and the antonyms are apophysis and perspective, and the example is the horn are pointed at the apex, bending upward and backward. And the sixth one is discernment, means सावधानी या विचारशीलता, and the एक noun, and the meaning is a freedom to act or judge on one's own, and the synonyms are attention, foresight, maturity, and the antonyms are carelessness, disregard, ignorance, and the example is cost in civil cases while passing any order and decree, the court has the discretion to grant costs. सेवेंथ वन इज अश्योर्ड, मिस आत्मविश्वासी। आप अश्योर्ड या गारंटी देते हैं ये चीज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा उस पर विश्वास करते हैं, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं अश्योर्ड, एंड द एग्जाम्पल इज, एंड द मीनिंग इज मार्क्ड बाय एश्योरेंस, एंड द सिनोम्स आर गारंटीड, सेटल्ड, श्योर, एंड द एंटोनिम्स आर indefinite, uncertain, unsure, and the example is an entire generation has been assured that 1971 will be avenged, and the eighth one is expedient, means vyavaharik, and the adjective, and the meaning is serving to promote your interest, and the synonyms are carpet bagging, useful, and the antonyms are disadvantageous, inconvenient, and useless, and the example is one cannot evade returning money to its rightful owner by the simple expedient of spending it. Ninth one is undermining, means durvalta, ये एक verb है, and the meaning is destroy property or hinder normal operations, and the synonyms are sabotage, countermine, counteract, and the example is South African supermarkets, for example, have been accused of undermining local traders and snubbing local suppliers. And the 10th one is implementation, means amal kriyanvanan,
and the noun and the meaning is the act of accomplishing some aim or executing some order, and the synonyms are enforcement, execution, carry out, and the antonyms are overact, underact, and behave. And the example is implementation responsibility will be decided as part of this process. And the next one is editorial analysis section, and the today's editorial is Kaveri disputes. आप देखे होंगे सेंटर को द सेंटर इज ब्लेम फॉर डिस्प्यूट गोइंग इनटू अनदर राउंड ऑफ लेजिस्लेशन. आप देखेंगे कावेरी डिस्प्यूट्स जो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी ये सब मिल के बीचों में कावेरी नदी का जो आपका डिसीजन आया है 16 फरवरी को, उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था. लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट है कि इतने सप्ताह होने के बाद, इतने वीक्स जाने के बाद भी जो है अभी तक उस पर जो है वो कोई भी उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट नहीं किया गया है. मतलब जो कोर्ट के डिसीजन है उसको जो है अमल नहीं किया गया है. इस पे जो है आप जो है इस एडिटोरियल में एडिटर इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. आप देखेंगे तमिलनाडु ने जो कोर्ट में इनिशिएट किया है बताया गया है कि सेंटर जो है इस चीज़ को जो है वो सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ था 16 फरवरी को जिसमें जजमेंट आई है. तो इट अपीयर्स दैट इट डज़ नॉट वांट टू हैंडल द इशू. अब ये बताया गया है कि ये जो इश्यूज़ हैं वो जो कर्नाटक में जो इलेक्शंस होने वाले हैं मिड मई में, उसके पहले इसको सॉल्व करते हुए नज़र नहीं आ गया, यानी कि इलेक्शन के कारण इसको जो है वो डिले किया जा रहा है. आप बताएंगे कि ये मिसफॉर्चून है कि 6 वीक डेडलाइन जो थी उनकी वो अब एक्सपायरी होने वाला है, और सेंटर में जो ये पिटिशन दिया गया है क्लैरिटी के लिए कि क्या ये चीज़ें होनी है या नहीं होनी है, जो फाइनल 2007 में जो फाइनल अवार्ड आया है ट्रिब्यूनल में वो जो है वो लागू होंगे या नहीं होंगे. आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में प्रोपोनेज मैकेनिज्म हुआ था. वहाँ बताया गया था कि तमिलनाडु में जो स्कीम वर्ड एक यूज़ किया गया था, जो कि उनके बोला गया था कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वाटर रेजोल्यूशन को रेफ़र किया गया है, और वही अपेक्स कोर्ट ने यानी कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है रेफरेंस किया था कि बोर्ड को. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि ये अभी तक इतने सारे हफ्ते होने के बाद भी इसका कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं दिखा है. आप देखेंगे कि सेंटर जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है कि जो स्कीम्स वगैरह जो यूज़ हुए हैं वाटर शेयरिंग में उसको इंटर स्टेट बॉडी में, और दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला है जो स्कीम जो मेंशन हुआ है उसमें किसी बोर्ड को रेफर नहीं किया गया है, यानी कि ना ही कोई कावेरी वाटर जो आपके बोर्ड्स अब मैंने अभी बताए हैं उसको रेफ़र किया गया है, बल्कि ये एश्योर्ड किया गया कि जो भी हैं चीज़ें इनको जो है वो अपने में बात करके इसको ख़त्म करनी होंगे. इतने ज़्यादा लंबा जो है वो चलने की बात नहीं है इस इक्विटी में, और इसको जितनी जल्दी हो सके वो हाईकोर्ट को भी इसमें अफेयर करने चाहिए और इसको जो है सॉल्व करने की बात, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उनके जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है. ये कहीं ना कहीं जैसे एडिटोरियल में जो है आपके एडिटर ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके वो इंटर बॉडी में ही इसको डिस्प्यूट्स को जो है वो रिजॉल्व करने की बात कही गई है. ये तो एडिटोरियल. हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड assured, and the options are A unsure, B guaranteed, C uncertain, D definite, and the correct answer is B guaranteed. Second one is in the following question out of the 4 alternative choose the word which is opposite in the meaning to the given word expedient, and the options are A useful, B carpet bagging, C carpet bag, D useless, and the correct answer is D useless. And the third one is in the following question out of the 4 alternative choose the word which is similar in the meaning to the given word discretion, and the options are A disregard, B carelessness, C attention, D ignorance, and the correct answer is C attention. And the fourth one is the sentences given with the blanks are overfilled with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question, and the question is political dash electoral consideration appear to have dictated the center's action, and the options are A or, B with, C and, D along with, and the correct answer is C and. And the fifth one is the sentences given with the blanks are to be filled with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question, and the question is it is unfortunate that the Kaveri dispute is once again before the Supreme Court barely waits the final verdict, and the options are A after, B before, C ago, D behind, and the correct answer is A after. Coming to the next section, that is idioms and phrases section, and the today's first idioms and phrases that we have today is a stumbling block, meaning an obstacle, and the example is I don't have any stumbling block on the path of my progress.
सेकेंड वन इज बिटवीन सन एंड सन, मीन्स आप सनराइज से लेकर सनसेट तक, एंड द एग्जाम्पल इज ही वर्क्स हार्ड बिटवीन सन एंड सन. Third one is to see the sun, means to be born, and the example is she saw the sun in 1992, means she was born on 1992. Fourth one is a month of Sundays, means long period of time, and the example is it passed a month of Sundays and many work remains incomplete. Fifth one is all and sundry, means everyone without distinction, and the example is grains and clothes are distributed to all and sundry. Today's topic is next section topic is extra topic, and the today's section is topic is water disputes between Tamil Nadu and Karnataka. आप देखेंगे बहुत सालों से disputes चलते आ रहा है. आपके इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, इसके रिगार्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में या फिर जीडी वगैरह में ये जो डिस्प्यूट्स वगैरह है या फिर वाटर डिस्प्यूट्स या कावेरी नदी डिस्प्यूट्स, उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं. अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर टैकल करते हैं, लिखते हैं, तो आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे. और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो इस एडिटोरियल में जो आपके लेक्चर आते हैं, प्लीज़ उसे रीड लाउड करें, जिससे आपके जो हैं राइटिंग स्किल्स और प्लस आपके कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन स्किल जो हैं वो आपके डेवलप हो पाएंगे. 7 days free demo classes are available for SSC Bank, and the timing is 8 AM to 10 AM, and the address is Everest classes opposite AN College Boring Road, Patna. Everest classes opposite AN College Boring Road, Patna, and you may also contact us on 7279845076, 7279845076, and 700415480 700415480. Thank you for watching this video. Please subscribe Everest classes for latest update.